Good morning, Ravinda ma'am. A very good morning. How are you? I'm good, ma'am. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बढ़िया. रविंद्र जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? A very good morning. I'm fine. आप बताइए आप कैसे हैं? हुई हम सब यहाँ ठीक है. So in another 30 seconds we can start. Sure. Ipsita, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please start the webinar. Okay, ma'am, sure. A very good morning to one and all present here. I'm Ipsita Shukla, and I have the privilege of serving as your host for today's session on design thinking and innovation. This event has been organized by Institutions Innovation Council, Skill Innovation and Entrepreneurship Cell in collaboration with the Commerce Association and the Udmade Foundation. I extend the heartiest welcome to our esteemed principal, Dr. R.K. Gupta, sir, the head of the Commerce Department, Ms. Sonia Dhingra, ma'am, our convener, Dr. Sonika Nagpal, ma'am, the convener of IQAC, Professor Anita Bajaj, ma'am, the convener of Kautilya Parishad, Ms. Deepika Sharma, ma'am, and our respected faculty members and all the distinguished attendees present here today. Before we begin with the webinar, I would like to give a brief introduction about IIC. The Institutions Innovation Council was established in the year 2021 for the implementation of National Innovation and Startup Policy of the Innovation Cell. One of the key objectives of Council is developing entrepreneurial ecosystem and nurturing innovations and startups of both students as well as faculty members. The cell also aims at creating a larger number of student-driven and sustainable startups by providing an ecosystem where students can be helped with training, skill development, networking, financial assistance, and other support. In pursuance of this objective, the cell organizes webinars, competitions, and interactive sessions from time to time. To kickstart our discussion, we are privileged to introduce our distinguished speaker, Dr. Ravinder Kaur, ma'am, who is a professor at Deen Dayal Upadhyay College, University of Delhi. Her unwavering dedication to ethical standards in education and her fervent commitment to the advancement of learning and development are truly commendable. She is also the Executive Professor of Innovation and Entrepreneurship, Udmade Foundation, Innovation Ambassador of MOE, an academician, and a great mentor. With her profound experience and expertise, Dr. Kaur is the perfect person to lead us in today's session. Without any further ado, I would like to invite Dr. Ravinder Kaur, ma'am, to take the virtual stage and share her insights with us. Ma'am, the floor is yours. Thank you so much, Ipsita, for your kind information. Really thankful, and thankful to Sonia for giving me this opportunity. And again, on my own behalf, I welcome all the participants. Before we actually start with the session, I would request each one of you, let's make it a participative, interactive session. And let's not it be a monotonous. That means even I am talking. So let's dive deep into it with each other's perspective. We'll start. So I thought I'll change. I'll just share my screen.
Uh, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. I'll request Ipsita, if no one answers, you have to coordinate between me and the audience because Okay, ma'am. now I can't see the audience. Like I can't because I'm in a slideshow mode. So today's topic Okay. is design thinking and innovation. How many of you have heard of this word design thinking, or what comes in your mind when you say design or design thinking? नहीं पता तो भी बोल दो जो दिमाग में आता है. There's nothing right or wrong. It's our perspective. How many of you have heard of this word before, design thinking? Yes, Rahul, please go ahead. I've heard of it. Okay. What do you understand by design thinking? Ma'am, designing basically showing your creativity into something you're dedicated to. Okay. So according to you, That's design. all I understand by design thinking. Okay. So Rahul says design thinking is something to do with creativity, right? Yes, ma'am, basically. Okay. Anyone else? चलो डिजाइन थिंकिंग छोड़ देते हैं. डिजाइन आपसे बोला जाए तो आपको क्या लगता है? व्हाट इज डिजाइन? इफ एनीवन टॉक्स अबाउट हाउ टू डिजाइन दिस, व्हाट कम्स इन योर माइंड? Ma'am, when I hear the word design thinking, I think it might be related to a shift in mental model, like seeing the problem differently and then thinking of the solution. Okay, that was very uh, near to what actually it is. So design thinking, may I know the name? Ma'am, Ria. Ria. So Ria said कि design thinking is seeing the problem with a different perspective. Hanji. Okay. No one said design thinking. Design, when we hear of design, तो हमें लगता है कि किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, किसी चीज़ को एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाना, किसी चीज़ को सुंदर दिखाना, किसी चीज़ का एकदम से वैल्यू बढ़ाना. नो वन आंसर्ड दैट. नॉर्मली बोलते हैं ना, हमने डिज़ाइनर को बुलाया है, let it be let it be clothings, let it be your interiors. You're always talking of designing, and whenever we go to any designer, our main purpose is to make it more, to make it look more aesthetic, to make it look more attractive. ऐसा नहीं किसी ने सुना या दिमाग में नहीं आया डिजाइन में? How many of you, when you hear of this word design, this comes to your mind? नहीं आया तो बोल दो नहीं आया. Let's be interactive, please. मैम आया था. Okay. So now let's start with, I'll show you this picture. What do you see in this picture? Ma'am, MRI machine. MRI machine. How many of you say it's an MRI machine? Ipsita, you can coordinate I it. believe, yeah, I believe a lot of people here have raised hands. Okay. They all think it's a machine. They are all saying MRI machine. So very correctly said, MRI machine. Can you find something different in this? Yes, the And there design is a is lot. very attractive and catchy. It's attractive and catchy. Do you think the purpose of MRI machine is to find out what the problem in any part of the body is? And it's not a very simple process. Do you think the design was made only to make it look attractive and catchy? Attractive and catchy, maybe to children specifically. To children, basically. Okay, right on the point. So here I thought we'll just discuss the concept of design thinking. It's normally discussed as a use case, but I took it as the first slide so that we can understand what actually design thinking is. Design thinking is the most modern approach to solve any problem, and we always call it as a human centric approach. जब भी हम entrepreneurship की बात करते हैं, किसी स्टार्टअप की बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि what is more important, product or customer, तो आप क्या कहते हो?
Customer. कस्टमर वेरी राइट दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो जाए, जितना मर्जी सुंदर लगे, जितना मर्जी यूजफुल हो, जितने एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाओ, बट इफ users are not comfortable with it, or if users are not liking it, it is a waste. So that means our customers are always our focus, our users are always our focus. So design thinking is a tool, is a process which makes the solutions according to the user, according to the consumer. So, the story behind this machine, which is a part of the adventure series of GE Healthcare. So, GE Healthcare, obviously, we know it's the best in the world. तो उसके एक जो डिजाइनर या साइंटिस्ट थे जो उनके दैट वाज डग हेड्स, and he came up with the most modern MRI machine which could find out the problems, or which could scan the body parts to the perfect accuracy. Okay, so he was very happy कि I have कि with so much of time, मैंने इतना टाइम इतना एफर्ट्स लगा के एक ट्रांस डिसिप्लिनरी सबको इकट्ठे करके एक बहुत बड़ी बढ़िया MRI मशीन लेकर आया हूँ, which will help the medical world, which will help this health fraternity to find out the problems. So he goes to the hospital, and where he has, and this is, let me tell you, this was not what it was a normal MRI machine. So he goes to the hospital, और he's very happy कि यहाँ पे डॉक्टर्स would really appreciate him कि आपने इतनी एक्यूरेसी से सब कुछ इतने अच्छे से आपने बनाया. It's the most advanced, technologically very savvy, and you have made this machine. So he goes there and he's feeling very proud that he's come up with such a machine. And he talks to the nurse. जहाँ पे जिस ward में obviously nurses are there, or the persons who are helping in healthcare, they are there, who help the patients go to a MRI machine and for the scanning. So he talks to the nurse ki, how are you finding this machine? What is the response of this machine? What is the, isn't it good? And he's expecting something like a applaud कि उसको कहा जाएगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया. So the nurse simply said very non-committally, yeah, it's okay. And he's surprised with this answer. And then he finds a young couple coming with a small child. Parents थे अपने बच्चे को लेकर आ रहे थे, and the child was continuously crying. And let me tell you, it's a true thing. It's not a made up story. And the child was continuously crying, and the mother was trying to solace the child. It's okay, it won't take much time. But the child was so afraid, so fearful, and the parents were also very tense, but they were trying to console the child. And then they came to this room where the MRI machine was, and the child was crying inconsolably. So when he saw this, he was surprised. What is happening? And he could feel something go wrong within himself, that this is my creation and it is making a child so fearful, parents so fearful, whereas it's going to help them. But somehow the child is made to lie on this, but the child keeps on moving, and finally a sedation has to be given to the child so that the child doesn't move so much because of the restlessness, and there is no problem while taking MRI, and he is so perturbed. And then he finds out it's a common practice. 80% of children have to be given a sedation if MRI has to be done. And he feels, oh my God, I thought it's the best thing which is going to help the mankind, which is going to help the health fraternity. But here I'm seeing people are crying, kids are crying. So he goes back to the IDEO school, which is the Stanford School of Design, and starts finding, he meets persons, he meets parents, he meets doctors, he talks to them, and finds out that people are not, kids are really perturbed, and so are the healthcare people who assist them, because every time they have to either sedate them or रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती लिटाना. So it's a very brutal task for them. So he goes back to this Stanford School of Design and comes up with this, that he has to make something which helps the user.
which also solves the purpose, but at the same time, its focus should be how things have to be made comfortable according to the user needs. So more than product, it's the user comfort, it's the user need, whether it's a obvious need, whether it's an unarticulated need. कभी किसी ने सोचा नहीं था, सबको लगता था अभी तो कराना ही है एमआरआई, बट कभी इसको किसी ने ये नहीं सोचा कि एमआरआई एक्सपीरियंस को भी एक हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं. So he came up with an adventure series. So all this thing was not per se beautification, it was only to make kids feel comfortable. एंड एडवेंचर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था, उसने पायरेट शिप लिया, अलग अलग शेप्स की बनाई. उसमें ऐसे ही जैसे इसको क्लाइंब करने के लिए जैसे पायरेट शिप में स्टेयर्स होती हैं, वैसे ही स्टेयर्स थी. रूम को वैसे ही डेकोरेट किया. और जब किड्स आते थे तो उनको यही बोला गया कि नाउ दिस इज अ गेम, इट्स अ पायरेट्स एंड यू आर, आपको देखना है पायरेट से बचना है. व्हेन यू विल गो इनसाइड, there will be a cave, you will hear sounds, you will hear noises, there would be pirates. So the entire perspective was changed for the pediatric ward, MRI for the pediatric ward, which gave it so much of experience that this adventure series, when came, it was found that the number of sedation really decreased exponentially. Kids were very happy, it was very comfortable. One of this within the adventure series was this pirate ship, and this gave the experiential innovation to the world, where particularly in pediatric MRI, where now kids were so easily going inside. They were so even excited कि okay, when would we come next? So this is what is the magic of design thinking. That means coming with the solution to the perfect matching of the user, depending upon what user's psychology is, where the user is from, what problems he is facing. That means if I have to come for a solution, I don't come up with a generalized solution, I go for a customized need. MRI to sabke liye bani machine, but for pediatric, because the needs were different, so the concept was given in a different manner. So this is the concept of design thinking. Are we on the same page? Yes, ma'am. Does it excite you कि what is design thinking? कि हम बात तो करते हैं, हमने दोनों चीज़ों की बात की. अभी तक हम डिज़ाइन को बोलते थे कि डिज़ाइन है, सब कुछ बन जाता है, उसके बाद उसको एस्थेटिक वैल्यू यूज़र के हिसाब से ठीक लगे, अच्छा लगे, सो दैट उसकी सेलेबिलिटी बढ़ जाए, वो था. वो डिज़ाइन, that concept is also there, but more than that, it is a user centric. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन, कहाँ का यूजर है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद जाकर उसको ऑब्जर्व करते हो, आप खुद जाकर उनसे बात करते हो. कई बार उनको यूजर को नहीं पता होता कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू हैंडलिंग इट कि यही है, वी हैव टू एडजस्ट विद इट. But you designers or the persons from design thinking background, they go to them, they talk to them, they observe them, they stay with them without telling them, but they find out their pain points, they find out their unarticulated needs, and then they keep on ideating, coming up with a prototype, experimenting, taking a feedback. Then again, if there are, once they take a feedback, they keep on changing. So it's a iterative technique. I'm just giving you the gist. In details, we'll go in the following slides. So remember one thing, innovation, this is a innovation. Innovation is something new, something different, which is adding value. So always remember is innovation doesn't come overnight. It's not a eureka moment, but it's a very structured and a thoughtful process. And this is obtained by a process using design thinking. Now let's see what design thinking is. What are its concepts? What are its mindset? So before that, let's talk about whenever you require anything, you want to have anything, three things are always to be remembered, which are very important. If you are working in some enterprise, if you want to work, if you want to start an enterprise, or even if you're doing anything in your personal or professional life. So most important, as we said, is the customer.
So always start with the customer. What are the customer needs? What does the user want? What is his unarticulated needs? What is his pain points? What issues I have to address? So that comes as desirability. What do people desire? लोगों को क्या चाहिए? अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो मेरे एक स्टार्टअप में हो, बट मुझे ये देखना है कि लोगों को क्या चाहिए. अब वो मैंने जॉट डाउन करने में खूब टाइम लगाना है अकॉर्डिंग टू डिजाइन थिंकिंग. आई हैव टू हैव रिसर्च फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज मीन्स मैंने लोगों के साथ जाके बात की 1-to-1. मैंने ऑब्जर्व किया लोग कैसे रहते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं अपने पे. जितना ज्यादा डेटा मेरे पास होगा, जितना ज्यादा मैं टाइम इसमें लगाऊंगा, मेरे को पता चलेगा लोगों की डिजायरेबिलिटी क्या है. एक बारी हमने डिजायरेबिलिटी देख ली, तो उसके बाद मुझे देखना है कि वो फिजिबल है या नहीं. डिजायरेबिलिटी देख ली, मैंने आइडिएट कर लिया, मैंने एक सोल्यूशन, एक टेंटेटिव बना लिया, बट क्या वो सोल्यूशन जो मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इज इट feasible or not? Is technology advanced enough to give me that solution, or do I have sufficient resources, or do I have a perfect team, do I have an organization which would help me reach to that solution? So that is finding your ecosystem, whether that solution is feasible or not. And finally, even if you're going to give the solution, in long run, is it going to give you some profitability? Is it going to sustain itself or not? That is important. So where all these three things, now we also talk of environment sustainability in terms of people, profit and planet, which has not been shown here. But where all these things overlap, that small spot is known as the sweet spot, which is the perfect solution coming out of design thinking. So that means we are seeing the solution, we are seeing the problems, we are focusing ourselves on the problems from the user's point of view, not from my perspective. क्योंकि I went to the market, मुझे लगा यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल ठीक तरह से नहीं हो रहा, मैं डस्टबिन्स लगा देती हूँ वेट वेस्ट के लिए, ड्राई वेस्ट के लिए, और लोग आके अपने आप डाल देंगे. मेरे को लगता है ये सबसे डिजायरेबल है. बट जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, उनकी क्या इनहिबिशंस हैं, दे आर नॉट, दे डोंट इवन नो हाउ थिंग्स आर टू बी डन, जब तक कल्चर चेंज नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा. So there is no one solution to a problem. You have to see all the angles. So that is what desirability is. Viability हम उसे कर सकते हैं, feasibility हम उसे कर सकते हैं नहीं, और viability मैं उसे long run में sustain कर सकती हूँ या नहीं, या उसमें से अगर मैं profit मेरा, if it's not a social entrepreneurship, if it's a commercial thing, will I be able to get profit out of it or not? So this is the concept of design thinking. Any confusions, any questions till this point? No, ma'am. अब हम डिजाइन थिंकिंग पे जाते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी और उनको सॉल्व नहीं किया जाता था, और ऐसा नहीं है कि अभी हर जगह ही हमें डिजाइन थिंकिंग. कहीं सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट नीड टू गो टू दिस प्रोसेस कि मैं लोगों से बात करूं. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स एफर्ट. बट देयर आर सर्टेन problems which are known as complicated problems, complex situations where there is no alternative but going for a design thinking. So हम अगर problems की बात करते हैं तो तीन तरह की problems होती हैं: known problems, known unknown problems and unknown problems. known problems, as the name specifies, मुझे पता है कि ये problem है और मुझे उसका solution भी पता है कि अगर ये problem आई तो इसका solution ये होगा, right? कि मुझे पता है कि आपके एक टीचर है जो क्लास नहीं हो रही, तो एंड आई नो एज अ पर्सन, लेट्स इन स्कूल, तो आपका एक एब्सेंटिज्म का पीरियड लग जाता था कि आपको एक टीचर दे दिया जाता था कि ये आपका तब तक क्लास लेंगे, सो द टाइम इज नॉट वेस्टेड. मुझे लगा है कि वो नहीं आए, ये प्रॉब्लम है, बट मुझे पता है इसका सोल्यूशन क्या है. सो सिमिलरली for a pilot, if he finds out कि space aircraft में कि अगर weather conditions ठीक नहीं है, तो he will switch off the autopilot mode and he will take the control in his hands.
तो उसको पता है कि ये एक्टिविटीज करनी है और चेकलिस्ट उसको पता है कि मुझे क्या क्या करना है। प्रॉब्लम आई बट उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी क्या तरीका है वो पता है। तो इसमें मुझे डिजाइन थिंकिंग की इतनी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। एक है नोन अननोन। मैं कॉलेज में गई, वी आर ऑल सो यूज टू फोन, एकदम अचानक से मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो गई, या मैं सुन नहीं पा रही और देयर इज सम प्रॉब्लम, तो मैं आई एम ट्राइंग टू, मैं उसको ऑन करूंगी ऑफ करूंगी विच वी नॉर्मली डू। कई बार मुझे लगता है पानी तो नहीं चला गया, मैं उसे सुखाने की कोशिश करूंगी। सो ऑल दिस थिंग्स, बट वो नहीं ठीक होता। तो अब फाइनली मुझे पता है कि ये क्रैश हो गया, मुझे अब सर्विस सेंटर पे जाना और उसको दिखाना है। मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आई है बट मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों आई है, और मैं कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने का, बट फिर मुझे पता है कि नहीं, आई हैव टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है और उसको फिर ठीक करना है। सो दैट्स अ नोन अननोन, मतलब प्रॉब्लम नोन है बट उसका सोल्यूशन कैसे आना है वो अननोन है, जो मुझे पता करना है। वन इज अननोन प्रॉब्लम। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ले आई, मैंने सब कुछ अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर भी एब्सेंटिज्म है क्लास में। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आ रहे हैं। हम अलग अलग एक्टिविटीज रख रहे हैं, हम बाहर से गेस्ट लेक्चरर्स को बुला रहे हैं, इनवाइटेड स्पीकर्स को बुला रहे हैं जो वैल्यू को ऐड करें, वो भी अच्छे से काम करें, पर फिर भी students are not interested. They're not interested in adding to their knowledge system. उनको लगता है कि नेट है, हम सब कुछ देख लेंगे। So I don't know. तो जहाँ प्रॉब्लम में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे उसको देखने के तरीके होते हैं कि मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, या कोई ऐसी नई चीज आई, कोविड आया, कि मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज इट वॉज नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. So it was an unknown problem. So in this picture, we show there was a departmental store, perfect departmental store with all the things which was required. Very according to the person, it was very well made. Still, there was no activity. People were not coming. People were ignoring the products. अब इसमें क्या करना है? How do I come to know कि मुझे क्या करना चाहिए? कि मेरे हिसाब से तो मैंने perfect solution दिया था, सब चीजों का ध्यान दिया था, but still I'm not getting what I looking for. वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजाइन थिंकिंग पे जाना, बिकॉज आपके पर्सपेक्टिव से जो आपने बेस्ट सोल्यूशन दिया, इट इज नॉट वर्किंग आउट। बिकॉज अभी भी जब मैंने ऐसा किया तो समवेयर आई एम फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट, आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट वाज द बेस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट द यूजर नीड्स, व्हाट द पीपल आर लुकिंग फॉर। सो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग कम्स। अब हमने ये बात कर ली कि डिजाइन थिंकिंग ये होता है, तो इसका मतलब डिजाइन थिंकिंग सबसे पहले तो यूजर सेंट्रिक है। यहाँ पे मैं हमेशा कस्टमर को या यूजर के हिसाब से ही सोल्यूशन, सो आई ऑलवेज फोकस on what the user wants. It is based on ethnographic observation. Now I come up with a high-tech solution for a farmer. I say it's an agri-tech. Have you seen, अगर आप देखोगे नेट पे, आपको स्टैटिस्टिक्स बताएंगे कि बहुत सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स फेल हो गए क्योंकि दे वर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फार्म और अकॉर्डिंग टू द सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी थी, वहाँ पे वो ड्रोन्स रोबोट्स चल ही नहीं पाए, और यहाँ पे या वो इतना टेक सेवी ही नहीं थे फार्मर्स कि वो उसको यूज कर सकें। तो मुझे कोई ऐसा जो मैं दिल्ली के लिए सोल्यूशन लेके आऊंगी, वो शायद मैं एक माउंटेनियस रीजन में वो मेरा काम नहीं करेगा या डेजर्ट में काम नहीं करेगा। जो एक अर्बन कल्चर है, अगर उस हिसाब से मैं सोल्यूशन लेकर आऊंगी, वो सब अर्बन या रूरल में काम नहीं करेगा। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन, it has to be based on ethnographic observation. That means एक कस्टमाइजेशन होना होगा कि अगर अर्बन पीपल के लिए मैं ये ला रही हूँ तो इसको ही मैं रूरल एरिया में या सब अर्बन एरिया में क्या चेंज करके मार्केट वहां पर भी हो। So when I'm doing an ethnographic observation, I have to go by intuition, because when I'm doing a primary research, I ask students, tell me why do you think there's an absenteeism? So most of them would say, we are preparing for our, जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नॉर्मली बोलते हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं,
दे विल नॉट गिव यू, अगर आपने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो सोल्यूशन, वो आपको उनके अंदर की डेप्थ का आंसर वैसा नहीं देंगे, बट यू विल कीप ऑन engaging them, you will keep on immersing with them in their conversation and find out actually what the pain point is. So you, and that will come only with intuition. आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, आपने बहुत लोगों से बात की, बट आपने उन सब लोगों से बात करके जो आपने एक्चुअली सेंटर पॉइंट निकाला वो किस पे बेस्ड होगा? आपकी इंट्यूशन पे. अभी हम बात करेंगे इस प्रोसेस की. इट्स अ 5-step प्रोसेस विच इज गिवन बाय स्टैनफोर्ड. अलग अलग लोगों ने दिया, बात एक ही है, बट इट्स अ नॉन लीनियर. ऐसा नहीं है कि मैं एक के बाद दूसरा ही मुझे जाना होगा, या इसके बाद ये जाऊंगी तो मुझे पता है ये सेट रिजल्ट आएगा. नो, देयर इज नो लीनियर dependence. It's a non-linear process, and that is why I have to keep on repeating it every time, taking the feedback from the people and seeing whether it's working or not, and then changing it. And how do I change it? To what step I go? Again, that depends upon what feedback I'm getting. So it's an iterative, and I am learning by experimenting it. It is not a theory based, but it's all experimental based. So as the actual definition goes by IDEO, which is the center, Stanford University ka, and the people who came out with this idea of design thinking are Tim Brown and David Kelly. They gave this, that design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit. What they are trying to find out, integrating three things which you just shown: desirability, feasibility, and viability. So they are integrating the needs of people, which is desirable. They are integrating the needs of your feasibility, whether you have the technology advanced enough to give you that solution, whether you have the required resources or not. And then viability, whether you have the sustainability, whether you are going to have a profitability in the future. So that's the requirements of business success. So design thinking, you always have to remember these four things. पहली बात ह्यूमन सेंट्रिक है और तीन चीजों को इंटीग्रेट कर रही है, जो है डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी और वायबिलिटी. एक एक्सपेरिमेंटल, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है. कंटिन्यूसली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम आइटरेट कर रहे हैं to reach to a point where we get a sweet spot which is overlapping of feasibility, desirability, and viability. Is it clear? Do we Yes, have ma'am. any questions at this point? Yes, ma'am. So remember always that epicenter of design thinking is empathy. जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं देखना, मैं ये नहीं कहूंगी क्यों नहीं करते अटेंड आप, आपको अटेंड करने से नॉलेज, दिस इज व्हाट यू आर हियर, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. So whenever I'm talking to people, I'm talking to my users, my main tool or my main epicenter is to come in their footsteps and see how they are tackling with the problem. So empathy is the main focus. जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया पायरेट शिप का, so वो कहाँ से इवॉल्व हुआ? He empathized with the child. He empathized with the parents of a young kid. How are they taking his so-called perfect design of an MRI machine? MRI machine में कोई problem नहीं थी. It was solving all the what it was designed for. It was the best ever design of an MRI machine. But for this particular section of people who are using it, that means pediatric, for kids and for their parents, it was a trauma. So he had to identify what best solution he can give. So the epicenter of design thinking is empathy, which goes towards finding the unarticulated needs or the pain points of the user. So the process is very simple. You can see, and this graph tells you everything about design thinking. As we initially showed, you have to start with the customer, or you have to start with the people, the user for whom you are trying to solve the problem. So you, as I said, you will investigate, you will have a research, whether it's primary, that means one-to-one, or secondary, that means whatever data is available on net or in some reports, that is your secondary source. So when you see, you can see you are trying to find out what is the problem. So
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आप बहुत टाइम देते हो. एज आइंस्टाइन राइटली सेज, if I'm given 60 minutes to solve a problem, I will focus 55 minutes in understanding what the problem is and then rest 5 minutes in finding the solution. सबसे बड़ा टास्क होता है कि मैं प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझूं. एक बारी मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने परफेक्ट बना ली तो मुझे सोल्यूशन निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं सब काम पूरे डेडिकेशन से कर रही हूँ, पूरी कमिटमेंट से कर रही हूँ, बट मेरा जो मैं जिस प्रॉब्लम को मैं मान के चल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन निकाल रही हूँ, एक्चुअली वो प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग में बहुत टाइम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, wearing a hat of empathy is very important. So what means what is the problem? So you define the problem. Then comes ideation. What if I do like this and I solve the problem? So you diverge. What is maybe आप बहुत सारे ऑप्शंस मान के चलते हो, क्या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है. सो आप आगे भी देखोगे डिजाइन थिंकिंग हमेशा डाइवर्जेंस से कन्वर्जेंस पे जाती है. पहले बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखती है, फिर चेक करती है, जो बेस्ट है वो कन्वर्ज करती है. उसी तरह से व्हाट इफ में देखोगे आप बहुत बड़ा ऊपर कर्व जा रहा है, विच इज टेलिंग यू कि बहुत सारे आइडियाज, यू डोंट फाइंड कि नहीं नहीं ये तो काम नहीं करेगा, आप सीधा सोल्यूशन पे नहीं जाते. व्हाट इज में उसके बाद आप व्हाट इफ दिस इज डन, will it help it, what if this is done. So you keep on writing your ideas, you keep on seeing what is the ideas, and you are going on the quantity of ideas, you're not going on the quality of ideas. You initially are focused only on what are the possible solutions. कुछ भी हो सकते हैं, कोई solution कोई गलत या सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अच्छा या बुरा हो सकता है. So in design thinking nothing is right or wrong. You can have a good design or a bad design. और वो कौन बताएगा? आपके यूजर. तो आप पहले बहुत सारे पॉसिबिलिटीज लिखते हो, which is what if this is, then you experiment and then you find out कि इनमें से बेस्ट आइडिया क्या होगा सोल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए. दैट मीन्स व्हाट वाउस, कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज आए, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने पॉसिबिलिटीज देखी कि नहीं ये सबसे अच्छा लग रहा है, लेट्स लॉन्च दिस फर्स्ट. फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों तक पहुंचाया, उनसे फीडबैक लिया और उनसे देखा कि एक्चुअली व्हाट वर्क्स. जो आपको वाव लग रहा था हो सकता है वो नहीं वर्क कर रहा, but as we said, it's a non-linear, experimental, iterative, based on the feedback. You are making your prototypes, you are checking it continuously, you are depending upon your feedback, you are making changes. So where you were not even aware of what the problem is, you are reaching to a solution where it is giving you a profit. Now profit could either be in terms of money if it's a commercial, or if it's a social entrepreneur, you are reaching to solution which was required by the society. So these are the 4 W's of design thinking, which have been given by 5 blocks as per the Stanford. The concept remains the same, बस उसको हमने और डिटेल में बता रहे हैं. हमने वहां पे किया था, यू स्टार्ट विद व्हाट इज का प्रॉब्लम मीन्स आप एम्पथाइज और डिफाइन कर रहे हो कि आपने पहले व्हाट इज में क्या किया, लोगों से इंटरव्यू किया, शैडोइंग मतलब उनके साथ रहे, आपने इंट्यूशन के थ्रू उनको अंडरस्टैंड किया, आप जजमेंटल नहीं हुए, आपने फिर लोगों के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को, उनके पेन पॉइंट्स को डिफाइन करना शुरू किया. सो जो आपने अभी व्हाट इज लिखा था यहाँ पे, सो दैट कम्स अंडर दिस एम्पथाइज एंड डिफाइन. देन यू सेड व्हाट इफ, तो व्हाट इफ इज नथिंग बट आइडिएट. अब आपने बहुत सारे आइडियाज आपके पास हैं, आप डाइवर्ज बहुत सारे आइडियाज लिखते हो, टीम बनाते हो, हर एक को बोलते हो कि तू अपने हिसाब से देख, and you don't tell ki this is my idea. You say ki it has to be initially, you all write down your ideas and then you brainstorm. तो उसमें से कुछ आइडियाज कॉमन निकल के आते हैं, देन यू इवेल्युएट द आइडियाज, ये कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा. तो आप आइडिएट करते हो व्हाट इज के बाद व्हाट इफ. फिर व्हाट इफ के बाद उसी में ही आप व्हाट वाउज, आपका बेस्ट आइडिया जो कन्वर्ज करता है, आप बोलते हो कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एंड देन यू मेक अ प्रोटोटाइप. उसको लेकर आते हो, उसका बहुत रफ मॉडल, just to see whether what you are thinking is aligning with the customer need or not.
So you make a prototype, and you keep on making a prototype, and then you go to your users to find out how close that prototype is in terms of giving them the best fit, in terms of giving the solution. So you keep on testing it. They will give you the feedback. When they give you the feedback, you will change either directly prototype. You will come to know, okay, I had defined it properly. My idea was right. Only I have to make certain tweaks in my prototype. It could also be possible that after your feedback, you may have to go to the first point कि मैंने तो सोचा ही गलत था, मुझे तो दोबारा से प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा. So it's a continuously iterative process. हर बार ये आप करते हो. And I wanted to show if I have. It looks something like this. कि ये आपका वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, बट आप किस पॉइंट से कहाँ जाओगे, कहाँ जाना पड़ेगा, यू डोंट नो. सो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि इट्स अ नॉन लीनियर. आपने एम्पथाइज किया, अंडरस्टैंड किया, उनको ऑब्जर्व किया, आप आपने स्टेटमेंट दिया, प्रूफ ऑफ वैल्यू दिया, आपने आइडिएट किया, प्रोटोटाइप बनाया, टेस्ट किया. टेस्ट उसको कैसे किया, लोगों को बताया इस तरह से कि वो एंगेज हो, इनको इंट्रीग किया, फिर आपने उसको एक्चुअली लॉन्च कर दिया. फिर उसको लॉन्च करने के बाद उसको एक प्रॉफिटेबल मॉडल के लिए लेकर आ रहे हो. बट कहाँ पर आपको ट्वीक करना पड़ता है, कहाँ किस पॉइंट पे जाना है, that depends upon a continuous experimentation. So it's highly iterative and a non-linear process. Is it clear? Yes, ma'am. तो यही हमने यहाँ बताया हुआ है कि हमारे बेसिकली दो चीजें हैं जिसपे हमने टाइम लगाना है. एक तो राइट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कि जो मैं प्रॉब्लम को समझ रही हूँ उसको अच्छे से समझना है. जब तक मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, चाहे मैं जितना मर्जी टेक्नोलॉजी अच्छी ले आऊं, मैं जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाए, मेरा फाइनेंशियल मॉडल जितना मर्जी अच्छा हो जाए, आई विल नेवर बी एबल टू have a successful venture. Why? Because my solution is according to a wrong problem. So I have to focus on the right problem, and then depending upon the right problem, I go to a solution, but always keeping in mind the user needs, the human-centric approach. और जैसे हमने वहाँ 4 W's की बात की थी, this model is known as a double diamond model. अभी भी यहाँ पे दो ही मेन चीजें हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन. बट प्रॉब्लम में आप क्या कर रहे हो, पहले लोगों से बात कर रहे हो, तो उसका है यू आर डिस्कवरिंग देम, यू आर ट्राइंग टू हैव एन इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम. फिर आप उसको डिफाइन करते हो, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, एक फोकस लेकर आते हो. तो पहला जो डायमंड है वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर है. तो वह फर्स्ट डायमंड इज यू आर डिजाइनिंग द राइट थिंग. आपने उसको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक तरह से बनाया है, उसी में ही आप बहुत फोकस्ड रहते हो. एक बार यू आर श्योर कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, now you are first was designing the right thing, now you have to design the things right. अब जो आपने एक प्रॉब्लम निकाल कर लेकर आए थे उसका बेस्ट सोल्यूशन देना है. अब आप वो क्या करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, टेस्ट करते हो, चेंज करते हो. सो यू आर डेवलपिंग एंड देन यू आर डिलीवरिंग. सो दिस इज डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप एंड डिलीवर. ये इसको डबल डायमंड मॉडल बोलते हैं. बट आप देखोगे इट इज गोइंग in alliance with what was given by Stanford, what is given by in the later model we had showed, what we were talking of 4 W's, what we are talking in terms of 4 D's or double diamond. The thing remains the same, and you will always find from divergence, you can see from divergence you are converging. चाहे वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में था, वहां पे भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे पहुंचे थे, कन्वर्ज हुआ था. उसके बाद सोल्यूशन में भी बहुत सारे आइडियाज के बाद आप एक पॉइंट पे पहुंचे थे. सो दिस इज अगेन, दिस इज योर डाइवर्जेंस, एंड देन यू आर कन्वर्जिंग व्हाइल यू आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, व्हाइल यू आर कमिंग टू अ सोल्यूशन, अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम अ डाइवर्जेंस टू अ कन्वर्जेंस. एंड इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस. हो सकता है आपको यहाँ से फिर दोबारा यहाँ जाना पड़े. So this is about the 4 D's. अब किसी भी एक स्टार्टअप के लिए, ठीक है, we are saying it's user centric, but अगर कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसके लिए डिजाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप मार्केट सर्वे करते हो, जब आप एक पेन पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हो, तो आपके जो चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. आप सोचने में टाइम लगा रहे हो बट साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, एंड उसके बाद आप फीडबैक ले रहे हो और अपना प्रोडक्ट और अपने सोल्यूशन को लोगों के फीडबैक के हिसाब से, और जितना ज्यादा डेटा आप लोगे उतना बेटर रहेगा. दैट मीन्स इट क्विकली कन्वर्ट्स योर आइडियाज टू अ tangible solution. It streamlines your processes and makes your teams more productive because they have insights. आपको insights होंगे. एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, आप लोगों के नजरियों को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अलग अलग तरह के अलग अलग टीम में लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो आपकी जो टीम्स है ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी. इट विल इंक्रीज सेल्स, बूस्ट कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड इक्विटी. ऑब्वियसली अगर आप उनको एक बेस्ट फिट दे रहे हो, you build your own brand, so it create better products, solutions and experiences. So this is one of the again a miracle. जैसे हमने वहां किया था वो भी हेल्थ सर्विसेज में था, ये भी है एक एम्ब्रेस बेबी वार्मर. सो ऑल ऑफ यू नो दिस इज एन इंक्यूबेटर जो हॉस्पिटल्स में होता है. इफ द चाइल्ड इज अ प्रीमेच्योर बेबी और इफ द चाइल्ड वेट इज वेरी लेस, normally they say we will have to keep the child in the incubator. अब incubator word per se has the same, चाहे वो मैं एक स्टार्टअप जर्नी में इंक्यूबेटर की बात करूं या एक मेडिकल हेल्थ फील्ड में मैं इंक्यूबेटर की बात करूंगी, टू गिव अ सपोर्ट. इंक्यूबेटर क्या करता है, एक न्यूबॉर्न बेबी को उसके लाइफ के लिए प्रॉपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. इट इज गिविंग हिम द रिक्वायर्ड हीट. मेन इंक्यूबेटर का काम होता है कि जब वूम से बेबी निकलता है तो जो हीट होती है वो प्रोवाइड करना. अ हेल्दी चाइल्ड हैज सफिशिएंट फ्लैश और सफिशिएंट वेट which gives him the heat. बट अगर चाइल्ड प्री मेच्योर है या अंडर वेट है तो उसमें इतना स्किन ही नहीं होता, इट्स ओनली मोर ऑफ बोन्स, कि वो उसको वार्मथ दे सके. सो द चाइल्ड इमीडिएटली नीड्स वार्मथ, a regulated temperature, which is same in the case of womb. So that is why they put the child in the, or the infant in the incubator. Now again, this was one of the projects of the Stanford School of Design Thinking, and this was the project which was led by Jane, and there were two Indians also, Naganand and Rahul Benekar, in the Stanford School. As their course model, they wanted to circumvent this problem for rural India or for developing countries. How to? Because the secondary sources showed that the number of deaths of the infants in rural India is very large, and the main reason is lack of incubation facility. Main reason is because in rural areas mothers are not properly nourished, so the infants, the newborn babies, they have very less weight, and that is why they are unable to survive. Now obviously this used to cost lakhs of rupees, and having this in dispensaries or in remote areas was not possible. Neither was it cost effective for them, nor they had this facility of installing it at different places. But they had to come up with a solution. So these people came to India. These people also went to Nepal, where there was extremity of the climate. They want to see what happens when there's a exceptionally cold, because when the child comes from the womb, the temperature is very high, and when it comes to the real world, the temperature, there's a lot of temperature difference, which normally your skin or your own body fats takes care of, but in undernourished or underweight or a premature baby, body fats are not there. So they found out, they came to many models, and then finally the breakthrough was coming up with this Embrace Baby Warmer. And then again there was ethnographic. उन्होंने हर तरह का मॉडल ट्राई किया. उन्होंने देखा कि अगर हम कुछ लगा भी दें तो रूरल एरियाज में, राजस्थान में या कहीं पर भी ऐसे है कि वहाँ वो घर पे ही डिलीवरीज होती हैं, एंड दे डोंट वांट टू सेंड देयर द लेडीज और द चिल्ड्रन टू अ हॉस्पिटल. अभी भी ऐसे लोग हैं, या उन्हें लगता है कि अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हमने किसी ऐसे उसमें नहीं डालना, कि भी उसको घर से नहीं निकालना.
So this all came with ethnographic observation, and they finally came up with after so many iterations, they came up with this blanket type of or a warmer type of a thing, which has a gel bag, which can be heated. उसको आप निकाल सकते हो, उसको हीट कर सकते हो, उसकी हीट करने के बाद वो 5 से 6 घंटे तक उतनी ही वार्मथ देता है ऑलमोस्ट जितने एक इंक्यूबेटर देगा, विच विल प्रोवाइड द वार्मथ टू द चाइल्ड। उसके बाद आप उससे निकाल के फिर हीट कर सकते हो, and again it will give a solution or same warmth for 5 to 6 hours. So this was the most effective solution given for developing countries, in rural countries and suburban places, where it was very cost effective. It was only around 10,000 or so which dispensaries could have it, and now maybe it is lesser than that people or a community can have it, and whosoever requires can be given. So this solved the problem. So this is the beauty of design thinking, कि यहाँ पर एक सोशल कॉज को, एक इतने बड़े कॉज को उन्होंने टैकल किया यूजिंग दिस डिजाइन थिंकिंग, कि लोगों से बात की, देखा क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि इंक्यूबेटर नहीं, इंक्यूबेटर अभी भी हॉस्पिटल्स में, ऑब्वियसली इंक्यूबेटर में apart from temperature controlling, they also give oxygen and all many things, but this solution could still solve the problem of mortality rate of infants to a larger extent. So I think a big round of applause to all these people who do this wonderful work. There are many examples I can tell you, but again time is limited. We can have a session only on case studies. How many of you have heard of this life-saving dots? Are you all still there? Yeah. Yes, ma'am, but I've not heard it. So this is again, it comes from India. It's again a exceptionally wonderful idea to solve a huge problem. It was seen, जैसे अभी हमने infants की बात की, उसी तरह से it was seen in tribal areas, in rural areas of India, that ladies after giving birth to a child are suffering with so many diseases like uterus cancer, hormonal changes. So the death rate is going really high because of all these problems. And investigations showed that the problem was because of lack of iodine, which is very even difficult. हम यहाँ पे बैठे हमें लगता है iodine की deficiency कैसे हो सकती है, but it was observed कि the iodine was not being absorbed properly, and because of lack of iodine, the mortality rate of women was going high. So again, this was done by a team of design thinkers, and they found out, they observed them, they shadowed them, they asked them. The different solutions were given. Okay, from the government, they would give iodine supplements. But at the end of the day, when they were taking feedbacks, they found that even the supplements they forget, because they're going to the fields, they are fields में जाते हैं, बहुत पसीना आता है, आयोडीन का लेवल कम हो जाता है, और उनको सारा दिन याद ही नहीं रहता ये सप्लीमेंट्स लेना. So then they came कि इंडिया है, इंडियन कल्चर में लेडीज बिंदी जरूर लगाती हैं. Again, this came with an observation, ethnographic observation, culture of the रूरल एरिया में तो जरूर लगाती हैं बिंदी. Cities में it is, some people do it as a custom, some people do it as a fashion, but in rural, all married women, they put up a bindi. So they came up with this wonderful idea of an iodine patch. अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो, इस बिंदी के नीचे कुछ है. So this is an iodine patch which is at the back side of the bindi. So when they stick this bindi, the iodine patch is being stuck to the skin, and the iodine is absorbed by the body through this patch. So each bindi has that amount of iodine which is required by the body on daily basis. जो एक दिन की रिक्वायरमेंट थी आयोडीन की, वो इस बिंदी के पैच में लगा दी, and it was found that the mortality rate of women really came out to be very low,
And this was done by Neil Vasant Medical Foundation and Research Center. I think that's at Pune, along in collaboration with Grey Group of Singapore. And I'll finish my here. There are many famous enterprise. There are stories about it which are very interesting. We can have another session. You can go through net and you would find it's full of interesting examples. And now all these stalwarts, all these, let it be Amazon, let it be Airbnb, they all are using design thinking. Pepsi, that's PepsiCo, that is a standard example that when Indra Nui came, she started with design thinking, and there was an exponential increase in the profits of PepsiCo. So these are the famous enterprises that use. So I'll wrap up my session by saying design is not a thing you do, it's actually a way of life. So be empathetic, observe your surroundings, come up with the solutions which are the best fit. Thank you so much. And this is my LinkedIn. You can connect to me if you want to do anything with innovation startups. I would be happy to mentor you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Madam, Thank you, ma'am, can I for ask your one enlightening question, please? presentation. Sure, Shampoo. Okay. Actually, ma'am, I'm from a rural area college, and the students studying here were not acquainted with the entrepreneurship concept actually. And Okay. when we used to tell these things to the students, they are actually not interested in it. Do you have any idea to make the students to take part in these activities? Because I find these students are not actually, they are not finding comfortable with these things. Very valid questions you have raised, Shambhuji. ऐसा ही है, it is all about awareness to their level. अगर हम उन्हीं की प्रॉब्लम के साथ उनको समझाएंगे, बिकॉज जब हम यहाँ पे अपनी जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम उनकी बात करेंगे उनके साथ, तो दे विल नेवर बी एबल टू मैनेज इट. वी विल हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या चाह रहे हैं. अगर हम उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं के एग्जाम्पल्स देकर कुछ बताएंगे कि ये हुआ है, देखो आपके सामने ये हुआ है, ये एक वैलिड एग्जाम्पल है, और इसको करना ये एंटरप्रेन्योरशिप है या ये एक स्टार्टअप है, कि आप एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो और जो सॉल्व कर रहे हो उसके साथ आप एक सोल्यूशन भी लेकर आ रहे हो. जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि शुगर केन का कितना वेस्ट होता है, बस उस शुगर केन वेस्ट से अब आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बन रही हैं, राइट? तो रूरल एरिया में कि क्या है, या बैम्बू है जो भी वेस्ट है, या काउ डंग, मतलब इफ यू विल सी आजकल काउ डंग वो खरीद रहे हैं कि आप ये दो, एंड दैट इज नॉट फॉर एनी अदर थिंग बट दे आर मेकिंग मेडिसिन्स, दे आर मेकिंग उसके यूरिन के साथ. आप देखोगे कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं. तो अगर हम रूरल एरिया में उनके पास जो है या जो प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन हम उन्हें बताएं कि देखो ये है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. उसी चीज को जो आप जुगाड़ करते हो, आप देखेंगे सिटी लाइफ से ज्यादा जुगाड़ रूरल एरियाज में होते हैं, बिकॉज चैलेंजेस तो वहाँ बहुत ज्यादा है, बट वो हर रोज उस चैलेंज से दे आर कोपिंग अप विद देयर ओन जुगाड़. एंड व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज अ सस्टेनेबल जुगाड़. उस जुगाड़ को ऐसे करना कि वो आगे तक सोफिस्टिकेटेड हो. तो जब हम उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को ही बताएंगे कि ये आगे तक ऐसे जा सकते हैं, दे विल बिकम इंटरेस्टेड. ऑब्वियसली वी हैव टू मेक देम अवेयर कि ये सिर्फ आप यहाँ पर हो, आप ऑनलाइन में भी ये सब कुछ कर सकते हो. यू विल गेट कि हमारी यूनिवर्सिटी में सब ऑप्शंस हैं, आप भी लिंक कर सकते हो, आप भी बेनिफिट उठा सकते हो, और आपको वही करना है जो आप वहां कर रहे थे, बट आपको राइट नॉलेज और उसको बढ़िया बनाने के लिए आप देखोगे अगर नेट भरा हुआ है कि बेस्ट सॉल्यूशंस इस वक्त टियर 2 टियर 3 से मिल रहे हैं. टियर 1 के लोग तो बस एक ऐप बना दी, टेक सेवी, बट जो एक्चुअल टैंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सोच है,
आप ग्रीन में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सब रूरल एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो रोज करते थे बट दे डोंट नो हाउ टू कमर्शलाइज इट। तो हमें उनको वो देना है कि उसको ये जो आप कर रहे हो इसी को ही थोड़ा सा और ठीक है आपका कमर्शियल एंगल हो सकता है अपार्ट फ्रॉम एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। तो आई थिंक अवेयरनेस, कीपिंग देम एट द एपिसेंटर, जैसे हमने डिजाइन थिंकिंग की बात की कि एम्पथी, तो यहाँ पे भी हमने एम्पथाइज करना है, हमने उनको सिटीज के साथ कंपेयर नहीं करना, हमने बोलना है अब आप यू आर द मेन पर्सन, यू हैव द सॉल्यूशंस, आपके ये सॉल्यूशन सिटीज में भी हेल्प करेंगे। Are you getting my point? It's just how do we present it? How do we make them convinced कि आप जो यहाँ कर रहे हो उसी को ही हम कमर्शियली भी कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन एक सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड करेगा और आपको एक प्रॉफिट भी देगा। Okay, thank you, ma'am. My pleasure. Does anyone else have any questions? Madam, it's just a request. Yes. Madam, can I ask? Sure. See, because we are in rural areas, we are not aware about the things which is being going on in innovation sector actually, and we are not connected in any of the institute, bigger institute. So, will you please share your contact so that we can Yes, sure. talk to Do I you? speak it or do I write it in the chat box? I'll write my number. और लिंक्डइन में है प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर कौर के नाम से, नहीं तो मेरा फोन नंबर है 99-102 4098 Yes, 102 40981 102 40981. 40981. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. I'll be happy to assist or help in whatever way I can. Thank you, ma'am. Do we have any other questions? How many of you really now think design thinking is a wow thing? I think that. So I would request you to just go through, browse, and you would find wonderful examples where you see, oh my God, it has so much of power. And this is not something we all can do it. We only have to be empathetic, observant, attentive, and then not being judgmental according to our perspectives, but giving room to each one's perspective. So always work in groups, always work in teams, collaborate, and then create. I believe we don't have any more questions. I So we think can conclude. Shameen has raised hands. Shameen, do you want to ask anything? Okay. So thank you so much. It was wonderful interacting with you all. And thank you, Ipsita. Thank you, Sonia, once again for giving me this opportunity to interact with the students. Thank you, ma'am, for your enlightening presentation. Your ability to simply